हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक एक नए गेम प्ले वीडियो में। और आज हम खेल रहे हैं होराइजन ज़ीरो डॉन। एपिसोड नंबर 14 है ये। एंड जो कुछ भी यार प्रीवियस एपिसोड में हुआ, एनिमीज़ के विजन ख़राब करना, टावर को टेक डाउन करना, यार ज़रूर देखना वो एपिसोड। बहुत 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 मस्त एपिसोड था यार। मतलब इतना अमेजिंग, इतना एक्शन था उसके अंदर। डिस्क्रिप्शन में फिर से ही हमेशा की तरह मैंने यूआरएल ऐड कर दिया। आराम से देखें, एंजॉय करें। एंड जो कोई है चैनल पर नया, डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड कमेंट करके यार प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताया करो खामियाँ या पॉजिटिव पॉइंट्स। वो मेरे को हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए, बाकी बातें बाद में एंड खेलते हैं। यहाँ भी यार सनराइज़ हो गया, कितना मस्त लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पहुँचना है गो टू सनफॉल। 1 मिनट पहले देख लेते हैं अगर कोई शॉर्टकट है या क्या उसको हम क्या यार क्या क्या बोलते हैं, मेरे तो दिमाग से निकल गया। वो जो क्विक ट्रैवल हो जाती है, तो देखते हैं मैप में इज़ इट पॉसिबल। क्या हो सकते हैं, कोई हमने कैंप फायर एक्टिवेट किया था कि हम जल्दी पहुंचेंगे। आई डोंट थिंक सो, पर स्टिल। अरे भाई 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 भाई, ये कहाँ है? इतनी बहुत दूर है यार ये तो। कोई बात नहीं। ओके, ये है एक कैंप फायर। फास्ट ट्रैवल करते हैं यार, कोई गलती फ़ायदा होता होगा। ये हम कैंप फायर आ गए हैं। ओए होए होए, ये तो वही जगह आ गई यार। यहाँ पे वो शायद वो बड़ा वाला वो उड़ रहा होगा शायद। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये मेरिडियन है शायद जगह। अभी भी दोस्तों I बहुत love दूर this जाना bit. है। अपने दोस्त को बुलाएं क्या? हाँ बेटा, कहाँ है दोस्त? फ्लैट हेड भाई, बहुत बढ़िया लगता है यार मेरे को ये। इट्स लाइक जैसे हम लोग ऐड देखते थे हंक की, हीरो होंडा हंक। तो जो उसमें आता था एकदम से बाइक के साथ It में। had to be done. No one else will die because of them. तो दोस्तों, जो एलॉय है, काफ़ी सारे राज इसे पता चले, काफ़ी इसने आगे डिस्कवर किया बहुत सी चीज़ें। वो कुछ है, वो कुछ है। रुक रुक दोस्त, रुक रुक दोस्त, रुक 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 दोस्त, पीछे कुछ रह गया। ये क्या है? ये फोकस। चल दोस्त, एक डेटा पॉइंट था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी सीरियसली बहुत 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 अमेजिंग होती जा रही है। मतलब ग्राफिक्स तो है ही अमेजिंग, बट स्टोरी जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो मेरे को कोई मशीन दिखी नहीं है। वो हो रही, बस बोलने की देर है एंड मशीन आर रेडी। एंड यार मैं सीरियसली सच बताऊं तो मेरा कोई मूड नहीं है अभी लड़ाई लेने का। अबे बाप रे, ये क्या है? ओ भाई 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 भाई, भाग ले दोस्त। ये क्या? ये पानी में से कौन सी एंट्री है भाई? ये तो मेरा दोस्त नहीं जा पाएगा। चल दोस्त, ये कौन सी एंट्री आ गई यार? लगता है मैं ही गलत आ गया। नहीं नहीं, अरे भाई 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 भाई, तो पानी वाले मॉन्स्टर्स हैं भाई। भाग ले यहाँ से, भाग ले भाग ले भाग ले। ये कैसे कैसे सी आ गई मशीन्स? ये देखियो, एलिगेटर जैसा है ये तो। रुकियो मत दोस्त, रुकियो मत। ये कैसा रास्ता दिया है मेरे को तो समझ नहीं आया। और सीरियसली यार, ओह, मशीन से क्या है यार वो? इतनी बड़ी मशीन्स क्रॉस करना है। चल मेरे दोस्त, आगे बढ़ भाई साहब। चलते हैं डेस्टिनेशन पे, आगे बढ़ते हैं। यार वो वाटर वाली मशीन तो भाई डेंजरस थी देखने में ही। वैसे मैं डरूंगा नहीं पंगे लेने से, या अगर कोई ज़बरदस्ती का कॉम्बाट आएगा मैं डरूंगा नहीं। मुठभेड़ में पीछे नहीं हटूंगा, सीधा अटैक कर दूंगा। बट अभी के लिए मेरा मेन मोटिव है सनफॉल तक पहुंचना।
ओ भाई 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 भाई, पंगा नहीं लेना यार, पंगा नहीं लेना। शायद एक पड़ चुका है मेरे पीछे। और बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, पर मैं रुकूंगा नहीं। बहुत तेज़ी से मशीन्स आ रही हैं, मैं इनको इग्नोर करूंगा और आगे बढ़ूंगा। कुछ ही स्टेप्स रह रहे हैं। फिर ऐसा क्यों लग रहा है यार कि आगे भसड़ होने वाली है, कुछ लड़ाई होने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है, या कुछ मेरे को कुछ ऐसी मशीन मिलेगी कि Maybe there's a way to override them, but where would I find it? मुझे नहीं लगता यार, कुछ तो चक्कर है। अपना निकलते हैं बस आगे। एनिमीज तो नहीं है ये? नहीं नहीं, पहुंच गए, कैंप फायर पहुंच Thanks for the गए। history lesson. But they have no idea what is beneath. We will learn much from this ALOY. That's what I'm hoping. चलिए सेव गेम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जाना है हमें ऊपर। यार सीरियसली ये सेव गेम से यार बहुत एडवांटेज मिलता है यार, कि कभी होता है ना कि मर जाते हैं या कुछ है, तो नियर बाय से स्टार्ट होता है, तो इट इज़ अ गुड फीचर। ओके, इससे भी ट्रेड करेंगे, पहले हम आगे बढ़े। पहुंच गए। ये क्या है? ओ भाई, ये तो मशीन वॉरफेयर अरीना। It's not like this in Meridian. At least. Give them time. I'm sure they'll miss it. चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर कोर्ट पे जाना है हम लोगों ने। Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. What are you talking about? Did I crash? Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. Outlanders, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. Filthy mercenary bottom feeders. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahavas. यार क्या पैलेस बनाया इन्होंने? Looking for one of their own. Should pay well. Conquered our exile. Let's see you go from the front. बस पहुंच गए हम लोग। कुछ टाइप की मीटिंग हो रही है, राजा ऊपर बैठे हैं, देखते हैं क्या फरमान सुनाते हैं राजा। By the glory of the sun revealed, behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I छोटा बच्चा। command Lucian's Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside? I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me, while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. For the Kestrels. Ah, they want us to see this, boy. This It is makes insane. Fan of this यार ceasefire. राजा का फरमान सुनते हुए They're going to मैंने see देखा You यार underestimated the ease उन्होंने of कुछ hiding बोला। in sight. The balustrade. एक हमें लेडी मिली, It's a उसने short हमें drop बताया from there. कि यार कुछ ऐसे है, चीज़ है, अब क्लाइम डाउन करना है, कैसे करना है आई डोंट नो। वो भाई बिल्कुल
इतना साला कहाँ से बंदा इंसान कर सकता है यार? इंसान है, शक्तिमान थोड़ा ना उड़ के चलेगा। पर हाँ, आई कैन गो, आई नो आई कैन जंप। बट वो एक लेडी मिली, उसने बोला कि यार जिसको सज़ा सुनाई जा रही है वो इनोसेंट है। तो हमें फाइंड आउट करते हैं। पहले तो फ़िलहाल के लिए क्लाइम डाउन करना है। ओ नहीं 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 भाई, आराम से। पहुंच रहे हैं क्लाइम डाउन। The other side of the tower. Look for a vent. ठीक है। ये क्या है? इस पे ये ऊपर क्या ही चढ़ेगा यार? आई डोंट थिंक सो ही चढ़ेगा। I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. कुछ तो उसने बताया है। चलिए एंटर करते हैं। I'm heading उसने कहा down. है I've spent a lifetime trying to पूरी uncover तैयारी the होनी secrets of चाहिए। this world. बढ़ते हैं आगे। Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobeck here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated you. See, by now, ओ भाई, Guess you can't have everything. that will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. दोस्तों गेट खुलने से हमने Welcome to Project Zero Dawn. अरे भाई बातें बाद में भाई, जो प्रोजेक्ट की हम वेट कर रहे थे वो मिल गया हमें। Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room. तो दोस्तों जिसका हमें बहुत समय से इंतज़ार था, प्रोजेक्ट ज़ीरो डॉन, इसके बारे में हमें पता चला है। हम फैसिलिटी पहुंच गए हैं, बट इस गेट को खोलने से हमने थोड़ी सी अटेंशन ड्रॉ कर ली है, जैसे आपने देखा भी तो सिनेमैटिक्स में। तो देखते हैं आगे क्या होगा। कितना शॉर्ट टाइम है हमारे पास सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris.
Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret super-weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super-weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Paris, out. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी सिनेमैटिक्स में देखा, यार जनरल हर्ष सज्जन जो थे उन्होंने तो साफ बोल दिया कि अर्थ पे लाइफ ख़त्म हो रही है, मशीन्स ने ओवरटेक कर लिया है। बट उन्होंने कहीं एलिज़ाबेथ का भी नाम लिया कि वो कुछ काम करे, वो चाहते हैं कि वो टाइम बाय करें, वो कुछ काम करें। क्या है वो? तो यार ये तो बड़ी क्यूरोसिटी डेवलप हो गई है यार कि चलो आगे देखते हैं क्या है, कैसे होने वाला है यार। अब तो सीरियसली अब अनटोल्ड जो है स्टोरीज अब खुल रहा है, अब खुलासा हो रहा है। They got in through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread अंदर आ out. गए यार ये लोग। If it moves, kill it. What is this place? अंदर आ गए यार ये लोग, और एक नहीं है कई सारे हैं। ये कुछ वेंट्स हैं, यहाँ से मेरे को शायद वो मिलेगा, कह सकते हैं एक एडवांटेज मिलेगी इन पे अटैक करने की। तो छोड़ना नहीं चाहिए इसको, बट मैं थोड़े सोच रहा हूँ कि सीधा घुसपैठ ही करें, तो सीधा ही लड़ते हैं। चल वन डाउन। ये क्या है कुछ? This'll do. अरे यार एक और गया। यहाँ कोई नहीं है, एक वो रहा। गन भी पड़ी यार, बट आराम से मारूंगा इनको, गन की ज़रूरत नहीं है। एक और है बस, हाँ वो रहा। ये कुछ कर रहा है वो, अब क्या कर रहा है पता नहीं, कुछ कर रहा है। मैं इस वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता, दूसरी साइड से जाना पड़ेगा।
देखते हैं, स्कैन करते हुए चलेंगे यार कि पोजीशन का पता चलता रहे। ये टैग करते हैं ना। अब आ गया, क्या करें? Oh, boy. We're too close to let tribal printers stop us now. The data points, what do they contain? ये क्या है? अच्छा, ये भी डेटा पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ़िलहाल तो। अब होती जा रही है स्टोरी और इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे चीज़ें अनरैप हो रही हैं। ओ, ये गेट तो बंद है यार। Data intact. Initiating playback. Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stocks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. The whole Earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा यार, एलिजाबेथ ने हमें बहुत से उसके होलोग्राम से हमें पता चला कि यार उसकी क्या थॉट्स थी,
कैसे अर्थ को उसने बचाने का आइडिया था, एआई मशीन बनाने का आइडिया था उसका, एंड शायद वो सक्सेसफुल हुआ है। इसलिए कुछ ट्राइब्स या कुछ इस एरिया में, मतलब जितना हमें पता है कि उस एरिया में अभी तक वो है, तो ऑल ओवर अर्थ भी हो सकता है और लिविंग्स हो, प्रूफ ऑफ लाइफ हो। तो देखते हैं अब धीरे धीरे, मैं फिर से कह रहा हूँ, चीज़ अनफोल्ड हो रही है एंड मैं खुद हैरान हूँ यार कि एकदम से गेम जैसे टर्न ले रही है गेम एकदम से। एक्शन नहीं है ये वाले एपिसोड में, बट बहुत कुछ सीखने को मिला है। शिट शिट शिट, हो गया एक्शन शुरू। ओहो पट, अरे क्या मिस हो रहा है यार। ओ भाई इनके पास क्या है, मैं भी ये ले लूं यार। क्या मशीन है, मेरे को भी मिल गई यार। ओ भाई 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 भाई, ये क्या है यार, क्या बवाल है। Is there another route? I've done this before. Just need my focus. इसको गिराते हैं मशीन को यार। भाई क्या बवाल था यार, ये क्या बवाल था भाई भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो अभी कह ही रहा था कि एक्शन नहीं है, पर एकदम से एक्शन आना यार इसमें। भाई साहब लगता है होने वाली है लड़ाई। ओहो गलत आ गया शायद, मैं इधर दूसरे वाले में जाना है। एंड इट्स ऑल लॉक्ड। Another one of these. Need to find the right. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. चलिए देखता हूँ यार, कुछ तो है इसके अंदर। ये तो ऑलरेडी ही अनलॉक्ड है, शायद इसका कुछ होगा। ओके ये भी गया है, बट कुछ मिसिंग है, तो ढूंढते हैं यार कि वो कुछ पार्ट मिसिंग तो आ रहा है। अरे यार कहाँ मिसिंग है वो, अपने फोकस से ढूंढते हैं यार, कहीं ना कहीं तो वो पार्ट होगा। डेटा एंट्री। Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. यार उन्होंने कहा है कुछ स्टोरेज में है। अब स्टोरेज यार किधर है, कहाँ है, आई डोंट नो। चलिए ढूंढते हैं। नया पार्ट स्टोरेज में रखा हुआ है। ये तो बंद है यार, लॉक है। मिसिंग से कैसे हो सकता है। रिस्टोर द डोर्स पावर। उन्होंने वैसे ये यहाँ पे आ गया है कि कैसे करना है, बट जब तक वो एक पार्ट नहीं मिलेगा यार, हाउ कैन वी डू इट, कैसे करेंगे यार। ये तो शायद आई थिंक सो कि पहले इससे कोई गेट एक्टिवेट करना है। ये हो गया है, ये ठीक है। फिर से एक और, ओके। एंड एक राइट है, एक डाउन है और एक राइट है। ओके ये होना चाहिए राइट। एंड दिस वन जो कि ये है, ये Done. I should check the door nearby. वो खुला गेट, एक गेट खुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत यार। कैसे वो जो उसने डॉक्टर ने जिक्र किया यार, वो कैसे बचाएंगे यार, आई डोंट नो, बट कुछ तो बवाल होगा। शायद ये वो पार्ट है। Looks intact. चलिए शायद वो पार्ट मिल गए, यहाँ लगाते हैं। क्यू टू इंस्टॉल। That should do the trick. हाँ हो गया एक्टिवेट। Now let's अब get that door open. अप एंड लेफ्ट, अप ठीक है, ये लेफ्ट, ये दिस शुड बी लेफ्ट और राइट।
डाउन, राइट एंड अप। ये है डाउन होना चाहिए, ये इसको देना है राइट एंड ऑल डन। व्हाट हैपेंड? ठीक तो किया? लेट मी चेक वंस अगेन। ओके, अप होना चाहिए। इट इज़ नॉट अप। ये अप है, ये राइट है, ये डाउन है, थर्ड वाला इज डाउन एंड दिस शुड बी लेफ्ट एंड दिस शुड बी अप। ओके, अरे यार, हे भगवान, ये उल्टा है। अब जब इसको घुमाएंगे तो ये वाला होना चाहिए नीचे, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि उल्टा है ना। अब ये वाला होना चाहिए, ओके, पहला वाला है नीचे, दूसरा वाला होना चाहिए लेफ्ट। यार, दूसरा वाला लेफ्ट होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए ऊपर अकॉर्डिंग टू इट, क्योंकि उल्टा करना है। एंड वो वाला होना चाहिए नीचे एंड दिस वन शुड बी ऑन लेफ्ट। शायद नहीं हुआ यार, स्टिल प्रॉब्लम है। ये उल्टा है यार। ये दूसरा भी चेक करता हूँ, ये तो हट गया यार। Why am I unable to unlock this thing? अगर इसको उल्टा करते हैं तो फर्स्ट वाला डाउन होगा एंड ओके, ये गलत किया मैंने। ये ऐसे होगा, उसका ऑपोजिट होगा, वो वाला अप होगा एंड ये भी ऑपोजिट होना चाहिए। लेट मी सी, हाँ, इसका ऑपोजिट होगा। आई थिंक सो, अनलॉक हो गया। That did it. Yes. Door should have power. Now to see what lies beyond it. अच्छा, उनकी गन्स हैं, मेरे को लगा कि वो खुद है। चलिए। ओ भाई, ये मेरे से पहले कैसे पहुंच सकते हैं यार? Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. यार, मारना है क्या? मारने में तो हम एक्सपर्ट हैं। इधर कोई नहीं है, इधर हैं दो, एक साथ घूम रहे हैं। दो हैं और दोनों इसी तरफ आ रहे हैं। दोनों इसी तरफ आ रहे हैं। पीछे से हमला करूंगा। डाउन, ले बेटा। You're finished. यार, क्या है इनके पास? ओवर पावर चीजें। यार, मैं भी ना ये निकालता हूँ अपना बढ़िया वाला आइटम। यार वैसे ठीक है, प्रेजेंट टीयर ब्लास्ट एरो निकालता हूँ। There! I see something! ओ शिट, कुछ होगा। अबे, उससे कुछ क्यों नहीं हुआ? अच्छा, स्टन हो गया वो। This is it! अरे 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 अरे, ये भी गया। अरे शिट, मैंने अब देखा यार, ऊपर घूम रहे हैं वो। ओके, चलो भाई। धमाका। डाउन, एक ऊपर है एंड उसके बाद शायद फायर एरो है। Try to run. Area inaccessible. Down. Elevators non-operational.
एक है और जो जिंदा है, इसमें लगने का चाहिए हेडशॉट। यार ये कैसे मिस हो रहा है यार? बच That's the गया। last of them. ऊपर कैसे जाएं? Or not. अबे और आ गए। बस तुम्हारे साथ तो लड़ाई है सीधी अब। अबे एक ही में दो उड़ गए। You can't invade me. Room's clear. For a moment, anyway. चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। You have to find Gaia. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So like, you probably... बहुत से एनिमीज आ रहे हैं हमारे पीछे। एंड हमें वो एआई जो टेक्नोलॉजी जिसकी एलिजाबेथ बात कर रही थी वो मिल गया है। ऑलमोस्ट कुछ कदमों की दूरी पे ही है वो। कुछ कदमों की दूरी पे ही है। I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. More clips. Careful now. ओबे भाई कितने सारे हैं यार। बच के चलना पड़ेगा। कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही दूरी पर है। कुछ ही देर में सब पता चल जाएगा। पर सब्र से काम लेना होगा। यहाँ बहुत से हैं, बहुत से। ओहो नीचे उतरना है। नहीं यार अब तो लेना ही Welcome पड़ेगा। to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. सही I जा रहे हैं। am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. एक तो ये रहा। Nothing here but echoes. But if she comes this way, गया ये तो। डाउन। only one way out of this. ओहो ये आ गया। आने दे। अबे ये क्या फेंका इसने? ओ भाई एमो खत्म। A gift from the... ओ भाई इससे बचना है भाई, ये खतरनाक है। बूम। उसने फिर से कुछ फेंका उसने। Should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्या ऊपर भी कुछ है यार? पहले ऊपर चढ़ के देखते हैं। कुछ तो है यार ये। यार ये डेटा सर्वर्स की भूल भुलैया। Welcome to Hades, Zero Dawn's extinction failsafe protocol, the ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to यार resurrect बहुत life. से डेटा पॉइंट्स So हैं why यहाँ give her a पे। ये क्या है? subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, Looks like the only way onwards. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am partly... पहुंच रहे हैं। कुछ तो है भाई यहाँ पर। इतना आसान ऑफिस में पहुंचना नहीं हो सकता। Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure.
The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. कुछ तो है वो. ये भी डेटा पॉइंट है यार. बहुत कुछ है यार. ये ऑफिस है क्या? भूल भुलैया बना रखी है पूरी. Looks like it used to hold something. Bats will benefit from antilopinate morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. एंट्रेंस कहाँ से है यार ऑफिस की? वाह, ये सही तरीका खोजा. सप्लाई क्रेट यहाँ पर. कुछ तो है. ये क्या है? कुछ तो है यार. ये The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? अरे भाई, रिफ्लेक्शन में दिख गए. Eclipse आ गए. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. ओ भाई. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. ओ भाई. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose?
See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well. For a savage. His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. No, it wasn't him. I could have finished you before he attacked. But I didn't. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. You're an idiot. A dangerous idiot, but an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then open this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. The Nora cast me out at birth. You're not hurting me if you hurt them. Really? Then it makes no difference one way or another. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. भाई साहब ये कहाँ फंस गई यार एलॉय बहुत से राज जान लिए थे यार इसने कहाँ फंस गई
गॉड नोस कैसे बचेगी ये दोस्तों। Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Oh bhai. Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turan ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the radiance in the eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! ओ भाई अरे भाई साहब भाई भाई क्या है ये यार। आजा आजा आजा। ये मशीन तो बहुत खतरनाक है दोस्तों। That did it. One more pillar on that platform will come down. करना पड़ेगा यहाँ And से। the weapons whipped. भाग एलॉय भाग। आजा बच्चू। It's down. ये पिलर भी गया, 2 पिलर गए नीचे। यार अभी भी नहीं। कितना सा रह गया। चल एलॉय। कुछ तो गड़बड़ है। Hey! Guess who got her weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! भाई इससे तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। On the sides of its head. They've got something to do with his lift attacks. अरे ये बम से बच गए। Looks important. कुछ तो है। अरे Gotta check the machine. They might have parts. बच गए। कुछ तो है। गई मशीन। यस ये मारा। Silence! ओ भाई Shadows, kill her! मेरे को सबसे डेंजरस यही लगते हैं। एंड सॉ टूथ। भाई Kill
I leave it to them? Come get me yourself! ये क्या? अरे भाई, साइलेंस. Silence? Whoa. ओए भाई साहब, हमारे सॉटूथ. Oh, amazing. So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time, then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans. Though, of course, far more advanced. Great. You're welcome, I guess. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse. Not that you knew the man who killed who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not gonna tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! Wind must have torn down from the mountains.